So, I welcome you all to this fourth day of our seminar. We have one third speaker, very famous cardiologist, Professor S.C. Sharma. He is from Bangalore, but he is now in America and now he's online. He want to deliver his lecture. So, I think his lecture is very important and I should invite Dr. Sharma to start his lecture. Dr. Sharma. And you just please tell the subject of your topic also. He's a very good doctor, cardiologist, and I think he will give us so many good information on Sanskāra. Ji, namaste to all of you, and thank you, Professor Ravi, and I'm thankful to the Maharishi Dyanand University for organizing this seminar. I was there last time with you people where we presented a small part of our research, very small that. And now I have, Professor Ji, I have some slides. Can I share? Yes, yeah, you can show. My system. Yeah, I will start them in a minute so that it will be for everybody to easy to follow. By the time you do it, I'll just introduce Dr. Sharma. Okay. He did his master in surgery from SNMC, MCH in cardiovascular surgery, postdoctoral degree from PGI Chandigarh 1986. He is associate cardiac surgeon at Apollo Hospital Chennai from 96 to 88. He is the chief of cardiac surgery at CIIMS Nagpur, chief of the cardiac surgery YD Hospital Bangalore 1990 onward, visiting professor cardiac surgery St. Winston Hospital, Portland, USA, won many national, international awards, and a Vedic student. So he combines in himself many things, and I think you will be very much benefited by his lecture. Yes, Dr. Sharma. So I will take a hybrid language. I will take in Hindi as well as some part in English also. So our international speaker, like the person who have joined listeners or even the audience from the India, in Hindi, they can follow it very well. Yes. So my topic is today, as you can all see, Vivaha, Sanskar and medical eugenics. Now, here I would like to explain what is the Vivaha Sanskar. It has two parts. Now, one is the selection of the Var and Badhu. And next part is the process, cultural process of the Vivaha, which all of us know and everybody doing every day. But I'm concentrating on the first part, that is the selection of Var and Badhu. So, Var और Badhu के चयन के लिए भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति ने के जो अनडिस्टॉर्टेड निर्देश हैं मनुस्मृति के, अनडिस्टॉर्टेड जो कमांडमेंट है जी, मैं उनका वैज्ञानिक आधार पर उनका विवेचन करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि जो भारतीय संस्कृति में मनुस्मृति इत्यादि गृह सूत्रों में जिन सिद्धांतों का पालन करने की कहा गया है, उन सिद्धांतों को हम मेडिकल यूजेनिक्स में किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. विवाह का अर्थ है, ये बहा धातु से बना है. बहा मीन्स बहते, मीन्स टू लीड अवे और कैरी ऑफ द ब्राइड फ्रॉम फादर्स हाउस, एंड बी मीन्स स्पेशल वे, लाइक बी एक उपसर्ग है, तो इट इज द स्पेशल वे बाय विच यू ब्रिंग द ब्राइड फ्रॉम फादर्स हाउस, दैट इज विवाह. And now the medical eugenics, medical everybody know Chikitsa Sansthan, and EU and genes, they are both the Greek word. EU means good or well, and genis means coming into being or growing. So the meaning of eugenics become a set of beliefs and practices that aim to improve the genetic quality of human population. And exactly same was the motto of Vivaha first part, like the selection of the Var and Badhu. So I'll go to the next slide. Please see that this is Manusmriti's slok, and Swami Dyanand has referred this in his both the books, Sanskar Vidhi
and Satyar Prakash. So this slok is Asapinda Chaya Matur Sagotra Chaya Pitu Sa Prasasta Dujatinam Dar Karmani Maithune. तो इसका हिंदी में जो अर्थ है जो स्वामी दयानंद ने लिखा है वह कि जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और जो पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है। अब आप ये देखिए कि ये महर्षि मनु ने लिखा है जो सृष्टि के आदि में थे, ये तीसरी जनरेशन में थे, ब्रह्मा के मानुष पुत्र थे और तब तक इतनी जनरेशन नहीं आई थी कि उनको सारी बीमारियों का पता लगे, पर फिर भी उन्होंने इस वैज्ञानिक तथ्य को कहा है। तो अब मेडिकल यूजेनिक्स में देखते हैं क्या ये वैज्ञानिक तथ्य सही है या नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड। Now, as all of you know, I have prepared this slide from the purpose of medical scientists, from the general science population, and even for non-science people. I hope they will follow it, understand. Now, every human cell has 23 pairs of chromosomes. So total are 46 chromosomes. Out of that, 22 pairs are autosomes. It means they look alike. And 23rd pair is sex chromosome. In female, it is known as XX, and male, it is XY. And they become male. So they are the two different. They are not autosome, they are different. X is very large chromosome, while Y is very small. And if it is there, then that person, that human being becomes male. And there are more than approximately 25,000 genes all on these 23 pairs of chromosome. Because of that, we see all the human diversity today in the world. So these are the 25,000 genes. Because of that, everybody, a single person in the world is different from other. There are not two alike persons in the world anywhere. Now, here I would like to explain another thing. We call it that recombination. In simple biological term, it is known as crossover. Means when these 23 pairs chromosome, they have pairs and they exchange their information to each other very well. This is known as combination of the or crossover of the chromosome. So this recombination happens routinely everywhere in all autosomes. So in 22 pairs, this routinely happens. That's why the all information from one chromosome goes to the other pair and it is mixed and then it goes to the children or to other cells. So when the cell divide, the 23 pairs separates and another pair is made in the cell. So they become two sets of 23 pairs and that's how the cell divides. And the other cell also get 23 pairs. So before this division, they share all the genes very well, so that all information goes in the daughter cells also. But this recombination happens limited in the sex chromosomes. Now this we have to understand what Maharishi Manu has said in that context. So limited happens in the sex chromosome, and there is a full crossover on only very small area of the X and Y chromosome. They are known as pseudo-autosomal region, PAR1 and PAR2. So both the chromosome, X and Y, have a small limb. On that there is very minute area, which is called as PAR1 and PAR2. Only their full crossover happens like it happens in autosomes. Other rest of the area, it is very limited. Now let us see the Y chromosome. In male, there is a negligible recombination on rest of the Y. Means after that a small limb of the Y where the genes are exchanging from the X, there is a no recombination crossover happens in rest of the Y chromosome. While in female, crossover on the rest of the both X chromosome of thousands of genes happens, and those thousands of genes are very critical for life. That's why the female have more diversity, because they're both X chromosome having, not only they are having full crossover on very small area, which is PR1 and 2, rest of the X chromosome also crossover happens very generously, not as much as in autosomes, but it happens in quite a lot, and thousands of genes
exchanges, and they are very critical for life. That's why the female have more agility. They survive more in the distorted situations. They are more stable and they have more diversity. So if understood that, then I will go to next slide. Now this is again little about the genetic thing, and I've simplified it. Since not many change in Y chromosome happens, and it is coming from generation to generation the same, it is small, and there's a repeated DNA. That's why avoid marrying in the father's growth. What Mercy Manu has said about the father's growth, because whichever man you will get to marry, like it is for Kanya, or even for the man, if he is getting the father's growth girl, in that by there won't be any change. So your ancestors, even 50 years, 50 generation back, they will have almost same by which you are having today. There may be minor changes, of course. So, and if you marry in the same growth, you are like a brother and sister, or like a uncle or the niece, like चाचा और भतीजी आप होंगे, या आप भाई बहन के जैसे होंगे. इसीलिए पिता के गोत्र में मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाई में, बाई क्रोमोसोम में बहुत ही कम क्रॉसओवर होता है, बहुत कम चेंजेस होते हैं. I'll go to the next. The people who don't do that, the pair who don't do that, their son will have a hybrid genes, because the by coming in the husband will be from other like the kul or vansh, or from the other lineage. So that's why they will carry at least some different gene, and that male of that couple will have a better genes or hybrid genes. And that is another reason you should avoid marrying in the father's gotra. पिता के गोत्र को avoid करें. Now next we'll go the माता का गोत्र and असपिंडा होना चाहिए, यानी माता की 6 पीढ़ियों में नहीं होना चाहिए. उसके पीछे क्या कारण है आप आगे देखें. Using chromatography, there are many techniques by like known as ancestry DNA, 23andMe, MyHeritage. By that you can do chromatography, like chromosome analysis of your cells. And by this chromatography, we come to know that usually in about 10 to 12 generations, there won't be any of the original DNA left. Means at the 10 to 12 generation back, whatever your ancestors had genes, they will almost be nil in your body. They won't be there. There may be very few, but they will not have much effect. So 10 to generation back, you won't find any trace, like you will not be related to that generation which happened 12 generation back. Now, if it happens, then we'll go to next point. One can go 6 to 8 generation back to inherit particular ancestral genome due to generous crossover of genes in autosome XX in female. Now, if you want to know how many genes of your ancestor coming, it is actually, we have to go back 6 to 8 generation. So if I go 6 to 8 generation back, whatever my genes are there today, it would have been there also in my ancestors, which are 6 to 8 generation back. This happens because there is a very generous crossover, as I told before, in the autosomes, means those 22 pairs. And in female also it happens very well, like who are the female. So if you look at your mother and her generation, a 6 to 8 generation back, then only you are related to your ancestors. After that, you won't find their gene. So if you avoid the 6 to 8 generations of your mother's side, then you will not have any gene of your mother's ancestors which are 6 to 8 generation back. And that is the reason why we should avoid the 6th generation of mother and mother goth. So mother goth is immediate to avoid the mixture of the same gene. And you go back at least 6 generation to 8 generation back. And this is the reason that why we should avoid, because after that, no ancestral gene will be left and you will get a different variety of genes. The children will be hybrid. They will not carry many diseases which are carried through the genes. Having understood that, that's why the Manusmriti directs
that you avoid the sixth generation of the mothers. And there is a lot of standard genetic research books, and I've given one site also, which is there, gwise.org 2013. They work on that, that how many generation we can go back, which when we had our common ancestor. So the next slide. Now we go another aspect of Manusmriti's commandment. महर्षि दयानंद ने अपने दोनों पुस्तकों में, संस्कार विधि और सत्यार प्रकाश में, विवाह संस्कार में इस श्लोक को भी दिया है. ये श्लोक है, हीन क्रियम निष्पुरुषम निस्छंदो रोमसा सरस्तम क्षयमया व्यपस्मारी स्वित्री कुष्टि कुलानी च. इसका अर्थ उन्होंने दिया है कि जो कुल सत्क्रिया से हीन हो, सत्पुरुषों से रहित हो, वेद्याध्ययन से विमुख हो, शरीर पर बड़े बड़े लोम हो, बवासीर रोग, क्षय रोग, दमा, खांसी हो, आम रोग हो, मिर्गी हो, श्वेत कुष्ठ हो, गलत कुष्ठ युक्त हो, इन कुलों की कन्या वर के साथ विवाह होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण विवाह करने के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं. अब ये महर्षि मनु ने बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि सृष्टि के आरंभ में लिखा, इसका अर्थ ये होता है कि उस समय वेद के द्वारा या उन जनरेशन्स में उनको इन सब रोगों का पता लगा होगा, और ये भी पता लगा होगा कि ये रोग एक परिवार से हेरिडिटरी, एक आनुवंशिक रूप से एक परिवार से दूसरे परिवार में जाते हैं, और तभी उन्होंने ये कमांडमेंट लिखा है जिसका स्वामी दयानंद ने रेफरेंस अपनी पुस्तकों में दिया है. अब इनको हम देखते हैं कि वैज्ञानिक में यूजेनिक्स पर ये खरे उतरते हैं कि नहीं, इनके पीछे प्रमाण क्या हो सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड आप देखें. मैंने इनमें से ये निकाल दिया कि जो कुछ सत्क्रियाहीन हो, तो आप सब जानते हैं कि यदि अच्छे लोग उस पुरुष उसमें नहीं है, वेद विद्वान नहीं है, या वो अच्छे कार्य नहीं करते हैं, तो कोई भी आज भी जनरल पॉपुलेशन में भी कोई भी ऐसे कुलों में शादी नहीं करता है, विवाह नहीं करता है. तो मैं इस बात को छोड़ करके मैं आगे जाता हूं. तो अभी पहले कारण हम लेते हैं कि लॉन्ग हेयर्स ऑन दी बॉडी, कि जिसके शरीर पर ज्यादा बड़े बड़े बाल हों तो उनसे शादी नहीं करनी चाहिए. इसका मैं आपको मेडिकली जो एक्सप्लेनेशन देता हूं कि एक बीमारी होती कंजेनिटल हाइपरट्राइकोसिस. इस बीमारी में पूरे शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको ए मैन ए वीमेन बोलते हैं, और ये जेनेटिकली हेरिडिटरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है. और इसके साथ बहुत सारे और भी डिजीज सिंड्रोम होते हैं जो कि व्यक्ति में या पुरुष और स्त्रियों में बहुत सी बीमारियां कर देते हैं. और ये ओवसली आपको नजर भी आएगा देखने में कि जिसके शरीर पर जैसे रीच जैसे लोग कहते हैं, इनको एब मैन कहते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं, तो उनमें और सारे डिफेक्ट भी होते हैं और बीमारी होती हैं. और यदि आप इनमें शादी इस तरह से विवाह करेंगे तो वो बीमारी दूसरे कुल में भी चली जाएगी, क्योंकि ये हेरिडिटरी है. दूसरा है पाइल्स, हेमरॉइड, जिनको बवासीर कहते हैं. ये भी दो तरह के होते हैं. कुछ तो अन्य बीमारी की वजह से लॉन्ग सिटिंग्स हो जाते हैं, वो मैंने निकाल दिया है. लेकिन हेरिडिटरी हेमरॉइड्स होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे, और ये एक्टिव जीन्स हैं, यानी डोमिनेंट जीन है, ये आगे जाते जाते हैं, और इनकी वजह से बहुत सारी और बीमारियां भी शरीर में हो जाती हैं, जिनको कि ये आज का सब्जेक्ट नहीं है. बस ये बताना चाहता हूं कि इनमें हेरिडिटरी है बीमारी, और इसके साथ और भी बीमारी होती हैं जिनसे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा. तीसरा आम रोग है. आयुर्वेद में आम रोग ज्यादातर क्रॉनिक जो पेट की बीमारियां हैं उनके लिए प्रयोग होता है. तो मैंने इनमें से कुछ बीमारियां ली हैं जो हेरिडिटरी और जेनेटिक चलती हैं, जैसे वॉवल इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एक क्रोन डिजीज है, सीलियक डिजीज है, और भी बहुत डिजीज है जो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं. और ये सारे डोमिनेंट जीन है, यदि पिता में माता में है तो वो भी आगे पिता बच्चों में दोनों में ही जाएंगे. और ये कैंसर को भी प्रीडिस्पोज करती हैं, और काफी खराब बीमारी, इनसे कभी भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है, और उसकी क्रिएटिविटी, उसका पौरुष या उसका पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाता है.
तीसरी बीमारी क्रॉनिक कफ, जो उन्होंने क्षमा और उसके एस्थमा के लिखा है। तो इसमें सारी बीमारी आती हैं, जैसे टीबी है। आप जानते हैं आज टीबी का इलाज है, फिर भी टीबी 100% क्योर होने के बावजूद भी उसका रीएक्टिवेशन हो जाता है, और एक परिवार में है तो सभी को हो जाती है। तो उन्होंने इसी भाव से लिखा है कि इसको अगर अवॉइड करें, पर मैं समझता हूं कि आज के ज़माने में आप विद मेडिकल साइंस एडवांस से आप टीबी का इलाज कर सकते हैं। पर जैसे ब्रोंकियल एस्थमा एक सिस्टिक लंग डिजीज़ है, हम और भी बीमारी इंटरेस्टियल लंग डिजीज़ हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ये कंट्रोल होती हैं और इनके साथ बहुत ही स्वास्थ्य का की जो समस्याएं व्यक्ति को बनी रहती हैं। तो इन परिवारों में तो यदि विवाह न किया जाए तो अच्छा है, और यदि लड़की के परिवार में बीमारी है और पिता के भी परिवार में, अभी बर के परिवार में बीमारी है, तो ये बीमारियां बच्चों को बहुत ही अर्ली स्टेज में आ जाएंगी। तो ये भी जानना जरूरी, यदि किसी कारण किसी में आप स्त्री कन्या है उसके कुल में है और पुरुष के कुल में नहीं है तो आप कर भी लें, लेकिन अगर दोनों कुलों में है तो वो बच्चे बहुत ही बचपन से ही या तो वो जीवित नहीं रह पाते, अगर जीवित रहते हैं तो पूरे जीवन भर वो बीमार रहते हैं इन बीमारियों की वजह से, और उनका जीवन भी कम हो जाता है, यानी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट पर मैं लेता हूँ सीजर्स, एपिलेप्सी। आप जानते हैं फिट्स जिनको मिर्गी आती हैं, ये भी जेनेटिक बीमारी है और ये भी हेरिडिटी चलती है। और इसमें एपिलेप्सी में बहुत तरह की एपिलेप्सी है, जिसमें कुछ में झटके आते हैं, कुछ में व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं कि झटके वाली तो आपको पता भी लग जाएगी, जो व्यक्ति थोड़े टाइम बेहोश होते हैं वो पता भी नहीं लगेगा। तो ये तो परिवार को ही बताना होगा कि उनके यहाँ पर मिर्गी है या जो सीजर्स की बीमारी है, क्योंकि हेरिडिटी आती है और दोनों बच्चों में जाएगी। ये भी एक्टिव जीन है, इसका डोमिनेंट जीन है, और यदि आप दोनों परिवारों में ऐसी बीमारी होगी तो ये बच्चों को बहुत जल्दी हो जाएगी और बच्चों का जीवन वास्तव में खतरे में यानी डेंजर में रहेगा, उनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। आगे महर्षि मनु ने लिखा है कि स्विस्टी यानी सूत्र कोस्ट यानी व्हाइट कोस्ट, ये एक बीमारी है, एल्बिनिज्म सिंड्रोम। आप सबने देखा हो कि कुछ लोग का जो स्किन कलर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो व्हाइट एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, और वो रंग का समस्या नहीं है, इसके साथ और भी और से बीमारी इतनी होती हैं, सिंड्रोम होते हैं और सारे सिस्टम्स की बीमारियां हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो जाता है और जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो व्हाइट कुष्ठ, सूत्री कुष्ठ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है गलित कुष्ठ। गलित कोष्ठ को जिसको लेप्रोसी कहते हैं, कोढ़ की बीमारी कहते हैं। हम जानते हैं कि आज इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन आज भी इसका ट्रीटमेंट पूरे जीवन भर देना पड़ता है और उसकी जो फॉलोअप है बहुत मुश्किल होता है। परसिवरेंस मरीजों की नहीं होती है कि वो पूरे जीवन लें, और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति लो सोशल स्टेटा के होते हैं, पुअर स्टेटा के होते हैं, तो वो पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और इस वजह से उनके सब अंग अफेक्टेड हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से लेप्रोसी हालांकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पर ये पूरे ट्रीटमेंट के उपरांत भी पूरे जीवन भर ठीक नहीं होता है। तो इसको अच्छा है कि इसको मैं एज ए मेडिकल साइंटिस्ट भी कहूँगा, इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक और मनुस्मृति में कमांडमेंट है जिसका महर्षि मनु ने विवाह संस्कार के प्रकरण में दिया है और महर्षि दयानंद ने भी इनको प्रयोग किया है संस्कार विधि और सत्याप्रकाश में। ये कन्या के बारे में उन्होंने कहा है, नोत वहेत कपिलाम कन्याम न अधिकांगी न रोगिणाम न लोमिका न तिलोमाम न वाचान पिंगलाम, अर्थात न पीले वर्ण वाली, न अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली, न रोग युक्ता, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्र वाली के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। ये नियम जितना मैं इनको समझता हूँ और मैंने बाकी लिटरेचर को भी देखा है, ये कन्या पर तो होते ही हैं, पर ये
पुरुष पर भी इनका एप्लीकेशन ये लागू होता है, ये लागू होते हैं पुरुष पर भी, बट कन्या पर इसीलिए कहा है कि कुछ इनमें ऐसी बीमारियां हैं जो एक्स लिंक डिजीज है, यानी जो स्त्रियों में एक्स क्रोमोसोम होता है उनसे अटैच डिजीज है, इसलिए महर्षि मनु ने उन्हें कन्या के नाम से कहा कि इस तरह के लक्षण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। ये किसी फीमेल के अगेंस्ट में, यानी नारी के अगेंस्ट में नहीं, नारी के विरुद्ध में नहीं है, ना स्वामी मनु का कहना, ना स्वामी दयानंद का, ना मेरा कहना। यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है, यह नारी का ये अपमान नहीं है, ये बताया जा रहा है यदि किसी स्त्री में, यदि किसी फीमेल में अगर ये बीमारियां हैं तो अच्छा है कि उसका पाणिग्रहण संस्कार विवाह ना हो, अन्यथा ये बीमारियां अगली जनरेशन में जाएंगी और वो बहुत ही, और मेल में अगर बीमारियां हुई तो ये उनके लिए जीवन के लिए घातक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि आगे स्लाइड में, जेनेटिक डिसऑर्डर फ्रॉम फीमेल। ना पीत वर्ण, पहले हम कहते हैं कि पीत वर्ण का महर्षि मनु क्यों कहते हैं, तो आप जानते हैं कि एक हीमोफीलिया बीमारी है जिसमें कि ब्लड डैमेज होता रहता है और उससे जॉन्डिस हो जाती है, और ऐसे व्यक्तियों को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग 20-30 साल तक खिंच जाते हैं, बहुत से लोग बीच में मृत्यु हो जाती है, आगे मृत्यु हो जाती है। और ये एक्स लिंक्ड है, यानी ये फीमेल में, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड होता है। तो चूंकि मेल में एक्स का कोई मैचिंग नहीं है, बाई क्रोमोसोम होता है, तो अगर ये मेल में ये एक्स इस बीमारी का जाता है तो मेल को भी बीमारी बचपन में ही हो जाती है और वो मेल चाइल्ड की बहुत जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। और यदि फीमेल में दोनों पर आता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ये बीमारी आती है, तो वो भी उतनी सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जिन फीमेल में केवल एक एक्स पर ही आता है ये जीन, तो वो उनको कम बीमारी होती है, वो आगे जीवन में खिंच जाती है, पर उनको प्रेगनेंसी करना और बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ ही फीमेल हैं जो बच सकती हैं जिनको कम सिम्टम्स होते हैं, और उसे जॉन्डिस से फिर आगे लिवर डैमेज होता है, उसे और बहुत सी बीमारियां कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो इस बीमारी से रिलेटेड उनसे बचना चाहिए। इसी में दूसरी एक बीमारी होती है कंजेनिटल जॉन्डिस। एक तो हीमोफीलिया हो गया जिसमें कि ब्लड डैमेज होता है, एक जिसमें लिवर डैमेज होता है या लिवर का सिस्टम खराब होता है कि जिससे वो पीत वर्ण वाली कन्या होती है, और वो भी जेनेटिक है, वो उनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, और इसलिए ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कि नो बॉडी हेयर। अब उन्होंने कहा कि बिल्कुल न हो, स्वामी दयानंद लिखते हैं जिसके ऊपर बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हो, ऐसी कन्या से विवाह करें जिसमें बिल्कुल बाल न हो, नहीं करना चाहिए। अब ये हमें ढूंढना कि इसका कारण क्या है। तो ऐसे कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कि जेनेटिकली चलते हैं, इसमें एक ट्राइकोरेक्सिस इनवेजिनेटा, और इस बीमारी में बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, स्किन डैमेज होती है, बाल टूट जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इसके साथ उस लेडी में उनके ओवरीज या जो उनके जनन अंग हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है, यानी एक जीन पर है तो बीमारी कम होगी, अगर दोनों जीन पर है तो ये बीमारी बहुत ज्यादा अगली पीढ़ी में हो जाती है। दूसरा सिंड्रोम है ड्वार्फिज्म विद हेयर हाइपोप्लेजिया, यानी इसमें बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो व्यक्ति ड्वार्फ होता है, उसकी बोन्स डेवलप नहीं होती हैं, उनमें टी सेल, बी सेल, यानी जो इम्यून जो सेल हमें पैदा करते हैं, इम्यून पावर जो देती है, उनकी डेफिशिएंसी होती है, और ये भी 30 साल 40 साल से आगे व्यक्ति जीवित नहीं रह पाते, और ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इस पीढ़ी को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, इस तरह की कन्या को। और ये लागू होता है मेल पर भी, ये कि मेल में अगर ये ऐसा है, वो बिना बाल के हैं, तो आपने बहुत से लोग जिनके दाढ़ी नहीं होती है, तो ज्यादातर उनके मेल जो जनन ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हो पाते, उनकी संतति नहीं हो पाएगी, और इसके साथ उनमें बहुत सारे और भी डिफेक्ट होते हैं। Now the third one is the lot of hairs. Now already I have discussed about the lot of hairs in the male. Now let us see lot of hairs in the female. फीमेल में जो ज्यादा बाल होते हैं उस बीमारी हिर्सुटिज्म कहते हैं, और ये हिर्सुटिज्म तब होता है जब फीमेल में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जिसे कहते हैं, अगर वो ज्यादा होता है
हर फीमेल में ये हार्मोन होता है, पर छोटी अमाउंट में होता है। यदि वो ज्यादा है तो इस बीमारी को हिस्टोटिज्म कहते हैं। उनके दाढ़ी मूछ निकल आती हैं, उनके ओवरी फिर अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाती हैं, सभी में नहीं पर कुछ लोगों में, और उनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, और काफी अगेन इसके साथ बीमारियां रिलेटेड हैं। दूसरी बीमारी पीसीओएस, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, उनको भी उन स्त्रियों के बाल ज्यादा होते हैं, उनमें भी बहुत और अदर बीमारियां होती हैं। थर्ड है प्रीकॉशस प्यूबर्टी, कुछ फीमेल 10 या 8 साल में ही मैच्योर हो जाती हैं, उनकी साइकिल प्रारंभ हो जाती है, उनमें भी लॉट ऑफ फेयर्स होते हैं बिकॉज हार्मोनल इम्बेलेंस, और उनके साथ बहुत सारी और डिजीज होती हैं, जिससे उनका आगे का जीवन भी कष्ट में हो जाता है, और उनको आगे संतान उत्पन्न होना भी मुश्किल होता है, और ये सारी बीमारियां नेक्स्ट जनरेशन में भी जाती हैं अगर वो जिंदा भी रह जाती हैं तो। और आगे है कि कुछ स्त्रियों में ज्यादा मेल हार्मोन बनता है, वो एक अलग बीमारी है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, और ये सारी बीमारियां या तो जेनेटिक या इनके कॉज अभी तक पता नहीं है। मैंने वो बीमारियां निकाल दी हैं जो कि एक्वायर्ड होती हैं, वो तो किसी में व्यक्ति में कभी हो सकती हैं, कुछ दवाइयों की वजह से, भोजन की वजह से, वो बीमारियां मैंने इसमें से निकाल दी हैं। अब एक नेक्स्ट आता है कि ब्राउन आइज। आप जैसे जानते हैं कि आई का कलर, जो आयरिस का कलर है, वो भी जेनेटिकली डिसाइड होता है, किसी की ब्लू आईज होती हैं, ग्रीनिश आई होती हैं, लेकिन ब्राउन आईज जिनकी होती हैं, भूरी आंखें, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये होता है कि इसको कहते हैं डिसफंक्शनल टायरोसिनेज इन मेलेनोसाइट इन पीपल, यानी जो पीपल की जो सेल्स हैं जिसमें कि कलर ब्लैक कलर बनता है, हमारे जो डार्क स्किन लोग हैं जिनमें मेलेनोसाइट्स होती हैं, वो मेलेनिन बनाती हैं कलर, जिससे हम डार्क कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं, वो मेलेनोसाइट कलर मेलेनिन बनाती हैं, और वो बनता है टायरोसिनेज से, एक एंजाइम की हेल्प से। यदि इसका ये एंजाइम काम नहीं करता है तो उनकी आंखें भूरी हो जाती हैं, और इसके साथ बहुत सारे डिसऑर्डर उस व्यक्ति में होते हैं। तो ये एक सिंपल है कि आप आंख देख करके ही, अब सब व्यक्ति तो आज समाज में भी नहीं करा सकते क्रोमेटोग्राफी, जेनेटिक स्टडी, तो विद्वान लोग या चिकित्सक या परिवार के सुबुद्ध लोग ये पता लगा सकते हैं यदि इसकी ब्राउन आईज हैं तो इसमें और भी बीमारियां होंगी, बेहतर है कि इस कुल को या इस कन्या से विवाह न किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ना मैं कुछ और आपको डिसऑर्डर बनाता हूं जिनका कि महर्षि मनु ने रेफरेंस नहीं दिया है, पर उन्होंने जितना दिया है उससे ये समझ में आता है कि वो उस समय ऋषि ये समझते थे कि किन किन कुलों में विवाह नहीं करना चाहिए, कौन सी बीमारियां हैं जो एक कुल से दूसरे कुल में जानती हैं। पर अभी और बीमारियां, और ये आपको अन्य जो ग्रह सूत्र हैं, जो आपस्तम ग्रह सूत्र हैं, गौबली ग्रह सूत्र हैं, उनमें कहीं ना कहीं सबके रेफरेंस हैं, और मेडिकल साइंस के द्वारा भी, और आपको आयुर्वेद में भी मिल सकते हैं। तो उसमें पहली बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक्स लिंक्ड है, जिसमें कि व्यक्ति को कलर नहीं दिखाई देता, और बाद में उसकी पूरी भाई 40 साल तक उसकी पूरी नेत्र शक्ति भी चली जाती है, और ये फीमेल कैरी करती हैं इसको, लेकिन मेल में एक एक्स पर भी बीमारी होने से वो 35-40 उम्र तक अपनी सारी आई साइट को खो देता है। और अगर फीमेल में दोनों एक्स पर है वो बीमारी, तो फीमेल में भी ऐसा ही होता है कि उसमें बीमारी हो जाती है और वो अंधी हो जाती है। दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, और इसमें भी बहुत तरह की बीमारी होती हैं। ये इनको सुपर फीमेल कह सकते हैं, और या आप इनको मेल हैं ये, पर ये लगते हैं जैसे फीमेल जैसे हैं। ये एक टर्नर सिंड्रोम है, जिसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, दूसरी जगह जो एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए उस जगह कोई भी एक क्रोमोजोम मिस होता है, और ये काफी फ्रीक्वेंट है। आप देखिए 2500 लोगों में एक व्यक्ति में टर्नर सिंड्रोम मिलता है। इनमें भी उनके मेल ऑर्गन या फीमेल, इसमें तो टर्नर में तो फीमेल ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो फीमेल जैसी लगती हैं, पर इन कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां आगे फिर जनरेशन में जाएंगी, और बच्चे ज्यादातर उनके आर्टिफिशियल तरीके से भी करें तब भी जीवित नहीं रहते। अब एक और है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बच्चों में होती है बहुत अर्ली, 3 या 4 साल की उम्र से ही बच्चों की मसल पैरालाइज होती हैं, वो ना बैठ सकते ना खड़े हो सकते, वो लेटे ही रहते हैं, अंत में
20 साल तक 22-25 साल तक मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कन्या से भी जिनमें बीमारी हो, ये भी एक्स लिंक्ड है, विवाह नहीं करना चाहिए। एक नूरी डिजीज है जिसमें बॉयज में ब्लाइंडनेस होती है। एक स्वेयर सिंड्रोम है, जो मेल होते हैं पर उनमें ओवरीज होती है, वो बाहर से मेल लगते हैं लेकिन उनके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो इनसे भी विवाह नहीं करना चाहिए। और मैं अगली स्लाइड पर, so thank you very much listening patiently to me, and I'll come back, and if anybody has questions, there are a lot of things left, but I try to summarize to get a 30 minutes time so that I Thank you, Dr. Sharma ji. You have given a very elaborated view, and so many misconceptions have been removed. Now, some people want to ask a question. you are There is most a welcome. question from Nand Kumar ji. Nand Kumar Ji. ji, you want to ask a question? You are free to ask. Okay, Dr. G, thank you kindly for that nice presentation. I enjoy it, but I have this question about genes and DNA. Now, in our cells in the body, the DNA or the genetic information, is it in all the cells of the body or is it in the brain area? No, it is all the cells. Every single cell have 43 46 chromosome and 23 pairs of chromosome, and all cells have this every information. Gotcha. Yeah, and it is there in the reproductive organ also, which makes a sperm and ova. They also carry, but they are only half. They have 23 chromosome only, but all rest of the cells have 46 chromosome, and every information there in every cell, total alike. Dev But there Sharma are ji, lot of Dharamveer things ji like, also want to ask. I'll come to you later, Dharamveer ji. Dev Sharma ji, you can ask question. जी जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शर्मा जी को प्रणाम करना चाहूंगा। और जी, आज आपने हमारी इतनी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया, और वो भी साइंटिफिकली, जो बहुत बरसों से हमारे अंदर थी। जी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने महर्षि दयानंद को इतना बड़ा वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया। मैंने किसी से आज से 4 साल पहले पूछा था, क्या संस्कार विधि जीनोम इंजीनियरिंग की बुक है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आई। जी जी, आपने ये प्रूव कर दिया कि महर्षि दयानंद की संस्कार विधि जीनोम इंजीनियरिंग की बुक है। जी, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। Dev Sharma ji, it is very absolutely true. This is what I presented. Swami Dayanand work just hardly 2%. We have done a lot of work on this. Yeah. Not only because I took this part, because this time permit, I have hundreds of slides on this. I chose that what I can present for this Exactly. the part of the audience, for this part of the seminar. And Yes. it is like how we work with Parokari Sabha, not only start from the Garbhadan up to Yeah. the Antyeshti, and there are many like everything is investigated. That's why it is Vijnan. It's Great. like investigation. No, From modern scientific point of view, it is many aspects are there, and many more we have to still search and see. This is Swami Dane quoted Maharishi Manu. What I want to know, these are the commandments of Maharishi Manu in the very early time of the way. It is the third generation. See, yes. the Brahmaji was the Amethuni Srishti. Brahmaji did not have parents. And Maharishi Manu as the Manaskota of Brahmayani in the second and third generation, they knew all these things. So by the time they must have not studied all generations. So it must have come from the Ved. Somebody must have told in the Ved. If nobody Right. agrees, is by the Ishwar. But I say how these commandments came in the Ved, because after the studying Ved, Maharishi Manu has put them in the Manusmriti. They are not added later on. And Yes. after only Maharishi Dayanand has quoted them in his book. So all they were scientific, and this is, I've given evidence, that's why I give references. Whatever I've given, it is all true, and much more we have to research in them further. Yeah, Dharamveer ji, you can ask. You can ask. Yes, sir. Thanks to everyone listening, and thanks to Dr. Raviji for organizing this seminar. And I would like to ask Dr. Sharma, according to what you just explained, if we take the entire world population and
we see there are many thousands of sicknesses. If the people don't get married, how much percent of the population will remain unmarried, and what will happen to the human race? If we look into the genes, what you mentioned, is there any possibilities to correct the genes and make them a healthy gene so that more people can get married to one another? And also, if we able to go back to see where all these sickness has evolved from, only then and there I think we can able to bring more better human race on this earth. So I want you, if you can please explain this to me. Yeah, Dharamveer, thank you very much for your question. This is totally genetic, highly qualified medical question. I will try, but you have put in a layman language, very fine, but it is very, very complicated. I will tell you the genetic question and I will answer it because I'm a cardiovascular surgeon. I'm not a top like super space in genetics, but it is my interest. And since I've gone and read genetic till up to the super specialty, so I will answer it, and my interest is there in genetics. You have two things. Can we correct the genetic defect and how the genetic defect came? So I'll come for the first one, how the genetic defect came. This is because of the mutation in the genes, because of radiation, because of many other changes in the body, because of the viral bacterial infections, because of the environment, the gene coding, it changes. See, it is nothing wrong is happening. They are chemical. Like I am telling ABCD, there are four bases in the gene and they are chemical. So they are given ABCD name. Suppose at place of A, by mistake, C comes and A goes on the place of C, then the gene is changed. And suppose the gene was for making my nose straight. My nose may become crooked by just change of this. And this, how it happens is because of even high fever can do this. Even the radiation from the sunlight can do this. Mutation in genes means a one chemical from one place shifted to other place. And this is known as mutation. And because of that, all these disorders has come. Now, all the genes, like whether it's autosomal genes or sex genes, because of mutation or because in the process of recombination, I told you, we have two genes and they have exactly opposite same gene on the other gene, and they are exchanging so that all information goes. In during that exchange, that thousands of genes are exchanging. If one chemical even displaces to one other place, like full, I told you in ABCD, one molecule is shifted. Now suppose whole molecule is shifted, ABCD block shifted to other place, and that block comes to this place. This also will create a lot of disease. That's how the disease has been created, and it carry on the family. Now, how to correct it? Your next question answer. Now there is genetic engineering is happening. First, we have identified the first one, how to identify which gene is affected. So now we have very detailed chromatography. So every person, we can map all the genome. And all the genome, we can say where in which gene, like which pair. So like I tell hemophilia is on, suppose it's on 18th chromosome. And in the chromosome and where it is there are thousands of genes on one chromosome. So in that they will 10,000 is there almost, you can say. So they will see where the gene, which is the location. Once they know that loci, then they have to change the gene. So they find out virus to take the gene. Like how you do the, now they are doing in the viruses, or even say the coronavirus created, it is possible. And researches are already going on in genetic engineering going on, even in medical science. They are trying to change the gene, but they need a vehicle. How to take that vehicle to that gene to that place, which goes to that, displaces the abnormal gene and put the normal gene there. So research are going on. I'm sure in the future, the very definite process of genetic engineering treatment will come. It's already started, and it is happening in the lab, and it will happen in the living people also. Plants, virus is already happening. So now third question you asked,
if everybody will not marry, how the world will survive? Sir, there is a survival of fittest. Most of the people who have genetic disorder, they usually die by the age of reproductive age or after that. Even they live to the reproductive age, their children will be diseased, they will die. So the body has created, the nature has created a system. Somebody has an intreatable disease, they should die, because otherwise they will carry this burden over the earth. So who has the best gene, they will only survive. And they will carry on by progeny the best gene, best people in the universe. Now you said number 4th partial question, how to make good genes. I'll answer you for that. If the people marry in the good generation, where the good genes, like I will search for my daughters, and for example, for my brother, which family the girl is there, where there is no disease, they are tall, they are strong, they are very mentally stable, they are not niskriya, they are not thief, they are not like the people who don't do parokar. I will search that, because everything goes by gene. And if I marry in that family and I have the same gene, then the children will be still superhuman-like. And for that, there is one race. They are in part of the Pakistan, Gilgit part, and in India also, in the near Leh, who are very tall, very pure. Their genes are least affected. They live more than 120 years old. And their women can even reproduce an age of 70 years. And I just forgetting a thought block, what is the name of the race, but this there, you can find out these races there today also in Gilgit, Baltistan area, and in the part of the Leh. A lot of people go there, Europe, to marry those. They call themselves real Aryans, real Aryans. You can say, I went to that village in Leh. I visited that persons. I met so ladies go there to get their children and they come back. People have done this. And I'm just forgetting a very common name. So like that, we should find out all over the world the good races, any better good genetics, and very, very piously we should tell what disease we have in our family. There's nothing to feel bad about it, nothing to hide it, so that the next generation not engenders. Their next generation is protected. So that and I think these answers are all 4 questions, that there will be good generation, they will not be. Bharat Singh also want to ask a question. Bharat Singh, yes, you can ask. Your voice is Thank you very much for answering, and my pleasure to Dambiji. Yeah, thank you, Professor Raviji. My question is, it's not related to Dr. Sharma's presentation, but Dr. Sharma, thank you very much. I mean, what you've presented indeed is very well researched, but all of that information also, as you mentioned, Maharishi Dayanand has put it in Satyar Prakash, chapter 3, I believe. It's all there. It's my question, Dr. Raviji, and this is for you because I have to go off just now due to work commitment. The Jat Karma Sanskar, in the West here, in America, New York, where we do a lot of the Jat Karma Sanskar, one of the first postnatal Sanskar, we tell our Yajmans, it's a sanskar welcoming the child into the world of light. For 9 months, that child was in mother's womb where it's all darkness, and the parents give special blessings with the grandparents and others. But from your perspective, Professor Raviji, what's the main reason behind performing the Jat Karma Sanskar? Professor Raviji? Yeah, I heard you. Okay. But I can't answer it. I think Dev Sharma ji. जात कर्म के पीछे ऐसा क्या है कि जात कर्म Dev Sharma ji, unmute कीजिए. Unmute. You have to unmute. Your mic is not on. Yeah. जी.
सर हिंदी में बता दीजिए एक बार प्रश्न। ये कहते हैं हाँ। जात कर्म संस्कार क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या है रहस्य, कि भाई नया बच्चा दुनिया में आएगा उसके लिए जात कर्म जी, करते जी, हैं, जी। तो जात कर्म क्यों किया जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? हाँ सबसे क्या हाँ जी, उसका? हाँ जी, बिल्कुल जी। हम अपने बच्चे को प्रूफ बनाना चाह रहे हैं। संस्कार विधि के माध्यम से हम अपने बच्चे को प्रूफ बनाना चाहते हैं। मतलब कि हमने उसका सिलेबस उसको आगे दे दिया, उस बच्चे को आते उसका सिलेबस दिया, उसकी जीवा पर ओम लिखा, ओम लिख करके हमने उसको बैरियर दे दिया कि आपको गुड आपको अच्छा ही बोलना है, खराब नहीं बोलना है। दूसरा, उसके काम वेदों से कह करके उसको कहा कि तुम्हें 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना है, नॉलेज, थिंकिंग, बेनिफिट एंड एग्जिस्टेंस, ये वेद के अर्थ हैं। फिर उसको हम कहते हैं कि तुम्हें अश्मा भव, परशुर भव, तुम्हें पत्थर बनना है, तुम्हें परशु बनना है। और इसके इतने सुंदर सुंदर अर्थ हैं कि कमाल के हैं। और फिर पिता उसको गोद में लेकर के कहता है कि मैं तुम्हें 3 लोक का स्वामी बनाना चाहता हूँ और इस दुनिया में जो कुछ है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो इज अ जस्ट कंप्लीट कोर्स फॉर कमिंग बेबी एंड ए होल लाइफ सिलेबस फॉर कमिंग बेबी। आने वाले बच्चे के लिए एक कंप्लीट सिलेबस है। Means अगर this is इस all सिलेबस को symbolic. This साइंटिफिकली, is all symbolic, you can say. This is all प्रकार के बच्चों symbolic. के लिए, Yeah. तो ये That कमाल का सिलेबस है जी। and it shows Okay. the desire of the parents as well as preparation for that child, how in future he is going to be developed. Right. Thank you. And because one of the verses we chant in the Jat Karma Sanskar, Indra Shreshtani Dravinani Dehi, that Yeah. we ask God for the child to have Shresht, very, Shrestha. very uttam, very high qualities as that child will grow. So thank you very much. At least, you know, what we tell our Yajmans here in America is what Dr. Dev Sharma bahut achhi tarah se bolte hai. Thank you very much. Yes, yes. So I think now all questions are over, and I must thank. No, Bhai Ravi, one more from Okay. Shilpa Vashisht. Shilpa Vasit. Okay, ask Shilpa ji. What do you want to ask? Good evening, everyone. Well, the question is not scientific, but I just wanted to know out of curiosity. Maitri sir, you just said when you were referring to Kanya as a word which is used by Manusmriti, not in the gendering term कि सिर्फ एक लड़की के लिए हम term use कर रहे हैं, but for any person who is having all these Means disorders. that is in the sense of X chromosome. X, okay. Yeah. So that is why what I want to answer that why did he use Kanya for as a term for people who have all these disorders and not any other common term? Maybe Purush in Sanskrit means any human being. He might have both Kanya and yes. That is what I wanted to clarify. Yes. Professor Ravi, can I answer that? Yeah. You answer. I think I raised. Shilpaji, it is like that. See, I also raised that question that it should not go against feminine gender. Yes, definitely. But Mercy has written, has quoted it, and Mercy Manu has written very clearly that ऐसी जो कन्या है ना, उसमें ऐसी कन्या से विवाह न करें जो माता की 6 कुल की हो और जो पिता के गोत्र की न हो, राइट? Yes, तो ये है कि जो आप कन्या से जब विवाह करने जा रहे हैं तो ये पुरुष पर भी लागू होता है, ये पुरुष के लिए भी है, वर्ग के लिए भी है कि वो भी माँ की जो अब देखिए पुरुष कन्या से शादी कर रहा है तो वो 6 पीढ़ी की न हो, लेकिन कन्या के लिए हो या कन्या ऐसे पुरुष से शादी करी जो उसके पिता के गोत्र का न हो। जी ऐसे ही जो वर है उसको देखना है कि कन्या उसके पिता की गोत्र की नहीं। अगर पिता के गोत्र की कन्या नहीं है तो कन्या के लिए वर अपने आप ही पिता के गोत्र का नहीं होगा, isn't it? Yes, sir. अगर माँ कन्या की 6 कुल की नहीं है तो फिर वो वर के 6 कुल की भी नहीं होगी। तो इसलिए कन्या का यहाँ दिया गया है, इसलिए वर का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। यदि कन्या की 6 पीढ़ी की नहीं है माँ
और उसके पिता का गोत्र नहीं है तो बर का तो अपने आप ही पिता का गोत्र बच जाएगा और माँ उसकी 6 पीढ़ी की नहीं होगी। और भारत में तो जिसको मैं प्रमोट करता हूँ कि आपको दादी का और नानी का भी गोत्र बचाना चाहिए कि इमीडिएट उनके जीन आ रहे हैं। जैसे आज मुझ में जीन मेरी माँ के हैं और मेरे पिता के हैं, और मेरे पिता में मेरे दादा के और मेरी दादी के आए, तो दादा और मेरे पिता मेरा गोत्र तो एक हो ही गया। उस इस नियरेस्ट जनरेशन में 3 जनरेशन से दादी बाहर से आई और माँ बाहर से आई। अब माँ बाहर से आई, माँ की माँ जो नानी है, माँ का गोत्र वही होगा जो मामा के या नाना का गोत्र है। तो माँ के परिवार में नानी बाहर से आई तो वो गोत्र वो जीन्स लेके आएंगे। यदि हम 3 जनरेशन डायरेक्ट हो गए, यदि हम 3 जनरेशन को बचा देते हैं तो बहुत से जो रिसेसिव जीन्स हैं वो फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं। डोमिनेंट डिजीज तो आएगी, जो डोमिनेंट डिजीज है मीन्स जो हर पीढ़ी में जाती है, पर जो रिसेसिव है जो पता नहीं लगते वो पीढ़ियों को देखने से ही वो बीमारियां हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसलिए कन्या के लिए प्रयोग किया गया है। और तीसरे श्लोक में भी कहा है कि ऐसी कुल की कन्या से नहीं जिसमें ऐसे जिसमें कुल या वर और पुरुष दोनों के लिए जिसमें हीन क्रिया निष्पुरुषम लिखा है ना, उसमें दोनों में ही है कि दोनों कुल में ऐसे पुरुषों या कन्या के कुल में उनमें विवाह नहीं करना चाहिए। और लास्ट जो प्रोफेसर रवि जो कह रहे थे, मैंने आपको बताया था कि नो द्वैत कपिलाम कन्या, वो ज्यादातर जितनी भी बीमारियां हैं वो सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक क्रोमोसोम की डिजीज है। लेकिन उसमें कुछ मैंने जो रेफर किए हैं वो ऑटोसोम रिलेटेड है। आई थिंक इसमें और रिसर्च की जरूरत है, हम और पता लगाएंगे और बीमारियां पता लगाएंगे जी जो कि सेक्स लिंक्ड है। Thank you so much for clarifying, sir. Thank you. Thank you, sir. So thank you, Dr. Sharma, for this beautiful talk. And it was given at the fag end. We were just closing, but you just reminded that you are there on the scene. So we took full benefit of your research and all these things.